This time my topic is how to determine the causality and stability of system using the Z transform. So what is the causality of the system? Causal system is called the system when the output is zero for the future inputs and the outputs only available for at that instant of the present input and the past input. So or up to the present input. So that is the called the causal system. So what is the response of the system? So in the response of the system, we use the YT. If the YT we call the response, then X is the input signal and H is the impulse signal, impulse, direct delta. So the how we calculate the response as I already told you, तो जब भी हमें सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालना होता है तो हम उसको कन्वोल्यूशन करते हैं. तो व्हाट इज द कन्वोल्यूशन? कन्वोल्यूशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. तो अगर हमें YT निकालना है, Y मीन्स रिस्पॉन्स, तो हम क्या करेंगे? इनपुट XT कन्वोल्यूशन HT. H इज द इम्पल्स सिग्नल. So the impulse response of the signal so equals to हो जाएगा HT into del T is equals to HT. So what is the causal system? Is one where the output at the present instant does not anticipate the input from the future instant. मतलब present में जो आपका output आ रहा है वो फ्यूचर इंस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता. दैट इज कॉल्ड द कॉजल सिस्टम. दिस मीन्स दी प्रैक्टिकल टर्म में अगर हम उसको कहा जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी इज इक्वल्स टू जीरो फॉर टी इज लेस देन जीरो. दिस इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट criteria and this is the only criteria for the causality of the system. That I can इसको highlight कर सकती हूँ मैं इसको. So this is the very very important criteria of causality of system. This condition is very very important. This you can see the my cursor. This is the very very important criteria. As you can say, this HT is equals to response of impulse response is equals to 0 for t is less than 0. In other words, we can say that the impulse response of the LTI system has to be 0 for negative time for the system to be the causal. This is very very important line. So you can note this line which I am reading right now. Impulse response of LTI system has to be 0. मतलब response जो है वो उसका 0 होना चाहिए LTI system का for the negative time for the system to be the causal. मतलब system अगर causal है तो स्टेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका जो Z ट्रांसफॉर्म है दैट शुड बी द स्टेबल. मतलब बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट. मतलब अगर हम बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी बाउंडेड आएगा. दैट इज द क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मतलब ये हो गया कि जो आपका Z transform है वो हमारा should be the finite. You can see in this condition HK summation of minus infinity to plus infinity HK should be finite value, less than finite. Once it is the finite value. Thank you.